Hello everyone, you are welcoming in Pragati's classes. In the previous video, we have already learned about present tense. We have completed present tense. Now we have another form of tense, that is past tense. What is past tense? Past tense is that form which work is not going in present time. We have done something before present time. Okay. So we have four types of past tense. Now just see the video and let's get started. We have four types of past tense: simple past, past continuous, past perfect and past perfect continuous. जैसा कि नेम से ही डिनोट है पास्ट, दैट इज समथिंग डन इन द पास्ट, जिसे भूतकाल भी कहा जाता है। प्रेजेंट टाइम को हम वर्तमान बोलते हैं और वर्तमान से पहले जो बीत गया है उसको भूतकाल कहा जाता है। ओके, सो वी हैव सिंपल पास्ट फर्स्टली, that is used to indicate an action completed in the past. Okay, used to indicate an action completed in the past. And another saying used for past habits, like what? Just see the example. For example, we can say I played football when I was a child. Okay, what does it mean? I played football. मैं फुटबॉल खेला करती थी या खेला करता था जब मैं चाइल्ड थी, या जब मैं छोटी थी या मैं जब छोटा था तो मैं क्या खेलता था? फुटबॉल खेलता था या खेलती थी। ओके, तो ये यूज फॉर पास्ट हैबिट्स, जैसे कि मैं बहुत टाइम पहले चाय पीता था या कॉफी पीता था, ये मेरी हैबिट थी, तो ये मेरी पास्ट हैबिट थी जो कि अब छूट गई है या मैंने छोड़ दी है। ओके, तो कुछ भी ऐसा जो हम पास्ट में कर चुके हैं, दैट इज कॉल्ड पास्ट टेंस। ओके, दैट विल नॉट कम इन प्रेजेंट टाइम। We have rule of this: subject and verb 2 plus object. Always use verb 2. As we know, verb have three forms: first, second, and third. First, we have already used in present tense. Past tense, we will use verb 2. Okay. Now we have assertive sentence. Assertive or positive sentence we can say. Simple sentence we can say. Okay. So we have subject plus verb 2 and object. ये assertive है हमारा, जिसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। She goes to sorry, just see its example. Sorry, by mistake. Just see its examples. They went to
School. Went is the second form of go. First, second, you cooked food. Third, we can say she wrote a poem. Fourth, we can say he, we can say he danced nicely. Okay, so this is our past tense examples. They went to school. Always use second form. You cooked food. She wrote a poem. He danced nicely. So we have four types of example of past tense. Okay, so we have assertive sentence or simple sentence, uh, simple past. You can say simple past. Now we have negative sentence. Just see negative. What is the rule? Subject plus did. Always use did because we have three forms of do, did, and done. Now we are using second form of do here. It is did. Subject plus did and not. In the present, we were using do and does. Now we are using only did. Subject plus did plus not. Verb first. Here we are using verb first because we are using did here. Did plus ing and the object. Got it? So this is our four types of examples. They, you, she, and he. They went, you cooked, she wrote, and he danced. Always use verb second with simple past. Now we have negative sentence. Negative sentence. Just see rule. Subject plus did plus not, verb first, and object. Subject did because did is the second form of do. We have three forms of do, did, and done. Here we are using second form of do, and with it we will use verb first. Simple past we will use only verb second, and with negative, interrogative, and interrogative we will use verb first because we are using did here. Got it? Just see the example which we have seen in simple past. So we have examples. They went to school. हमने लिखा था they went to school because went is the second form of go. So here we are using they did not go to school. Okay, I'm giving you only one and two examples. Um, you cooked food. So here we are using you did not cook food. Okay. Now we have interrogative sentence with all the sentences with verb second we are using, but with negative and interrogative we will use did and verb first. Always always use these kinds of rules. Rules are very much important.
बिकॉज अगर आप रूल्स को नहीं समझेंगे तब तक आपको सेंटेंसेस नहीं आ पाएंगे। तो रूल्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप रूल्स को अच्छे से समझिए। यहाँ पर रूल है हमारा इंटेरोगेटिव का। मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुकी हूँ कि इंटेरोगेटिव मीन्स आस्किंग अ क्वेश्चन। सो हियर हियर ऑल्सो आई एम आस्किंग समथिंग। सो यहाँ पर है हमारा डिड प्लस सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट, and always use question mark because asking a question. So I'm just giving one example. Did they go to school? Did you cook food? क्या तुमने खाना बनाया? ये सब पास्ट में ही चलेगा कि मैंने आई एम आस्किंग इन द पास्ट, आई एम आस्किंग कि तुमने खाना बनाया था, क्या वे स्कूल गए थे? ओके, तो ये these kinds of one example we can say. क्या उसने लेटर लिखा था? Did she write a letter? Okay, so these kinds are interrogative sentence. We have last one, interrogative sentence. Interrogative sentence. Rule: did subject plus not verb first object and question mark. To see the examples, did they not, क्या वे स्कूल नहीं गए थे? Today and tomorrow we are you can use. Okay, did they not go to school? And did you, क्या तुमने खाना नहीं बनाया था? Did you not cook food? So these kinds of examples we will use in simple past. With negative sentence, rules will be changed, and with the simple past, always use subject and verb second. Okay, so ये था हमारा simple past जिसके हमने four types of sentence complete कर ली हैं: assertive, negative, interrogative and interrogative. Now we have another one, past continuous. Okay, now we have past continuous. वीडियो काफी लॉन्ग हो जाता है जिसकी वजह से मैंने इसको पहले से ही प्रिपेयर करके रखा हुआ है। तो जस्ट सी पास्ट कंटिन्यूअस, व्हाट इज पास्ट कंटिन्यूअस? सो पास्ट कंटिन्यूअस लाइक कि ऐसा कोई काम जिसे हम पास्ट में कर रहे थे। ओके, पास्ट में हम कर रहे थे, तो यहाँ पर है यूज टू डिनोट एन एक्शन, यूज टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट। ओके, जो कि पास्ट में चल रहा था, कोई वक्त था जो कि चल रहा था। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज ड्राइविंग अ कार, I was driving a car. What will be the rule? Was, were, and ing will be compulsory. Okay. So was, were, and ing will be the rule of past continuous. Okay. So first we have assertive sentence. We have assertive sentence rule: subject was, were plus verb की first form and ing plus object. So what will be the example? I was reading a newspaper. मैं newspaper पढ़ रही थी. She was dancing on the stage. वो स्टेज पर डांस कर रही थी. They were going to पंजाब. वे पंजाब जा रहे थे. ठीक है, तो ऐसा कोई भी वर्क जो कि पास्ट में चल रहा था, जो पास्ट में चल रहा था, तो ये हमारा क्या हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस। जिसमें हम पास्ट के बारे में बात करेंगे, कोई भी बात है तो वो प्रेजेंट में नहीं होगी। हो रहा था, कर रहा था, ऐसा हो रहा था, वैसा हो रहा था। ओके, तो इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि हमारा पास्ट कंटिन्यूअस क्या है। नेक्स्ट वी हैव नेगेटिव सेंटेंस।
In the negative sentence, the subject was, were plus not plus verb first plus ing and plus object. ओके, तो यहाँ पर है हमारा नेगेटिव सेंटेंस. ओके, तो नेगेटिव सेंटेंस, I was not reading a newspaper. I'm just giving you one example, one example. ओके, तो नेगेटिव सेंटेंस में जैसे कि हमने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल देखे हैं. आई वॉज रीडिंग अ न्यूज पेपर, शी वॉज डांसिंग ऑन द स्टेज, दे वर गोइंग टू पंजाब. तो यहाँ पर हम नेगेटिव सेंटेंस में हम नॉट का ही यूज करना है, तो हम इस तरह से यूज कर सकते हैं. आई वॉज नॉट रीडिंग अ न्यूज पेपर, शी वॉज नॉट डांसिंग ऑन द स्टेज एंड दे वर नॉट गोइंग टू पंजाब. आई एम जस्ट गिविंग द वन एग्जाम्पल ओनली फॉर understanding. Okay, so this is our negative sentence. Now we have next one, interrogative sentence. And the interrogative sentence, as we know, this is the asking a question. Okay, तो इसका रूल होगा हमारा was, were plus subject plus verb first plus ing, object and the question mark. Okay, so was she dancing on the stage? तो क्या वह स्टेज पर डांस कर रही थी? आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन कि क्या वह स्टेज पर डांस कर रही थी? तो ये है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट वी हैव इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस, जिसमें हमारा नॉट यूज होगा. हाउ इट इज? इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस, was, were plus subject plus not plus verb first plus ing plus object plus question mark. So what will be the example? Were they not going to Punjab? क्या वे पंजाब नहीं जा रहे थे? तो ये है हमारा इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस. तो दिस इज अवर पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस, जिसमें हमारा वर्क क्या हो रहा था, क्या चल रहा था. तो ये सारी चीजें हैं जो कि पास्ट कंटिन्यूअस में हमारी कवर होती हैं. ओके, तो हमने इनके 4 पार्ट्स देख लिए हैं, असर्टिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोनेगेटिव. ओके, नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट, एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि हमने जब प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था, उसमें हमने ये पढ़ा था कि हमारा वर्क कंप्लीट हो चुका है. मतलब कोई भी वर्क है जो कि कंप्लीट हो चुका है. इसमें ऐसा कोई वर्क जो कि पहले ही कंप्लीट हो गया है, अब उसका कुछ नहीं होना है. लाइक पास्ट परफेक्ट इज यूज्ड टू शो एंड शो द एक्शन दैट टुक प्लेस अर्लियर, जो कि पहले ही हो चुका है. क्या हो चुका है? जैसे कि एग्जाम्पल है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर बिफोर डॉक्टर केम. डॉक्टर के आने से पहले ही पेशेंट मर चुका था. तो यहाँ पर काम खत्म हो गया है, अब पेशेंट मर चुका है, तो अब कुछ भी नहीं हो पाएगा. इट मीन्स द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम. डॉक्टर के आने से पहले ही पेशेंट मर चुका था. तो यहाँ पर इस तरह के सेंटेंस यूज होंगे पास्ट परफेक्ट में. इसका है फर्स्ट हमारा असर्टिव सेंटेंस. तो इसमें हमारा रूल लगेगा सब्जेक्ट प्लस हैड. वन मोर थिंग, हमने प्रेजेंट परफेक्ट में हैज एंड हैव यूज किया था. यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है, इसलिए हम एक ही फॉर्म यूज करेंगे, दैट इज हैड. ओके, तो यहाँ पर वर्ब थर्ड ही यूज होगी एंड ऑब्जेक्ट. So what will be the example? Example will be, he had given an interview to the director. उसने वह डायरेक्टर को इंटरव्यू दे चुका था. ठीक है, वह डायरेक्टर को इंटरव्यू दे चुका था. ये हमारा असर्टिव सेंटेंस हो गया. नेगेटिव सेंटेंस में हमारा नॉट यूज होगा. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, वर्ब थर्ड एंड ऑब्जेक्ट. ही हैड नॉट गिवन एन इंटरव्यू टू द डायरेक्टर. उसने डायरेक्टर वह डायरेक्टर को इंटरव्यू नहीं दे चुका था. ओके, तो इस तरह के सेंटेंसेस हैं जो कि हमारे के कहाँ यूज होंगे? दैट विल बी यूज इन पास्ट परफेक्ट. ओके, नेक्स्ट वी हैव इंटेरोगेटिव सेंटेंस. द रूल विल बी हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट एंड द क्वेश्चन mark. So, had he not given an interview to the
to the director, both are correct. Had he not given an interview to the director, and the question mark. Understood? क्या वह डायरेक्टर को इंटरव्यू नहीं दे क्या वह डायरेक्टर को इंटरव्यू दे चुका था? तो ये था हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस. एंड इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस, हाउ इट इज? इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस, had plus subject plus not plus verb third plus object and the question mark. What will be the example? Had he not given an interview to the director and the question mark. क्या वह डायरेक्टर को इंटरव्यू नहीं दे चुका था, या उसने डायरेक्टर को इंटरव्यू नहीं दिया था? तो ये दोनों ही करेक्ट है, दे चुका था एंड दिया था, जिसमें हमारा वर्क हम बात को कंप्लीट कर चुके हैं या ऐसा हो चुका है, उसके आगे अब ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा तो या हो जाएगा. तो ये हमारा टॉकिंग पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह की टॉकिंग कर रहे हैं और हमें कहाँ पर किस तरह का रूल यूज करना है. तो रूल्स को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा और बहुत ही अच्छे से समझिएगा, क्योंकि रूल्स ही है जो कि टेंस में काम आएंगे. गॉट इट? So this is our interrogative sentence, and we have past perfect sentence, past perfect tense. Okay, so this is our past perfect. Next we have past perfect continuous. Past perfect continuous, as we know the name यूज टू डिनोट, हमने उसमें पढ़ा था कि जिसमें वर्क हमारा चल रहा हो, किसी से शुरू हुआ है और वह कंटिन्यूस अभी भी चल रहा है. तो यहाँ पर भी वही सेम थिंग फॉलो होती है. यूज टू डिनोट एन एक्शन दैट बिगिन बिफोर अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट, कभी पास्ट में शुरू हुआ था, एंड कंटिन्यूड अप टू सम टाइम इन पास्ट. ओके, तो पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में ही कहीं ना कहीं वह चल रहा है. ओके, तो किस तरह से? जस्ट सी द एग्जांपल. आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश इन दिस स्कूल फॉर 20 डेज. मैं इस स्कूल में 20 डेज से इंग्लिश पढ़ रहा था या पढ़ रही थी या सीख रही थी. सॉरी, लर्निंग विल बी. सो आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश इन दिस स्कूल फॉर 20 डेज. इस स्कूल में मैं इंग्लिश 20 दिनों से सीख रही थी. ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया है. हमें हमेशा पास्ट परफेक्ट में एक चीज मैंने आपको तब भी बताई थी, प्रेजेंट परफेक्ट में यहाँ पर सिंस एंड फॉर यूज होगा. ओके, तो यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस में कैसे यूज होगा? सो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड द सिंस फॉर. सो व्हाट विल बी द एग्जांपल? शी हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग. तो यहाँ पर वह तुम्हारा सुबह से वेट कर रही थी. कब से वेट कर रही थी? सुबह से वेट कर रही थी. तो यहाँ पर she had been waiting for you since morning. Negative sentence, subject plus had not been, verb first, ing, object and since for. So she had not been waiting for you since morning. वह तुम्हारा सुबह से वेट नहीं कर रही थी. Interrogative sentence will be had, subject, been plus verb first, ing, object and since for and the question mark. मैं अगेन एंड अगेन आपको यही बोलूंगी कि रूल्स को आप बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि रूल्स ही इम्पोर्टेंट है टेंस के लिए. टेंस को समझने के लिए हमारे पूरे टेंस में जो भी हमारे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस है, ये हमारे ऐसे टेंस है जो कि हमारी डेली स्पीकिंग में, डेली बोलचाल में यूज होंगे. तो इस तरह से हमें अगर रूल याद रहेगा, अगर हमारे माइंड में रहेगा कि ये रूल है, तो हम कोई भी सेंटेंस को बहुत इजीली बना पाएंगे. तो ये हमारा है. इसी तरीके से ही अगर हमें रूल्स याद होते हैं तो हम इंग्लिश स्पीकिंग अच्छे से कर पाते हैं. ओके, तो यहाँ पर रूल्स को बहुत अच्छे से याद रखिएगा. तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, verb first, ing, object, since for and the question mark. What will be the example? Had she been waiting for you since morning? क्या वह तुम्हारा सुबह से वेट कर रही थी? तो यहाँ पर ये इस तरह यूज होगा.
Next we have interrogative sentence. Interrogative sentence: had plus subject plus not plus been for first ing object and the since for and the question mark. So what will be the example? Had she not been waiting for you since morning? क्या वह तुम्हारा सुबह से वेट नहीं कर रही थी? तो ये इस तरह से यूज होगा. तो इसी के साथ हमारा पास्ट टेंस कंप्लीट होता है. ये थे हमारे पास्ट टेंस जिसमें हमारा पास्ट कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम पास्ट सिंपल पास्ट के बारे में, पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में, पास्ट परफेक्ट के बारे में एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ चुके हैं. यहाँ पर अ, यहाँ पर नेक्स्ट हमारा आएगा सेंटेंस जो कि है हमारा फ्यूचर टेंस, जिसमें हम फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके रूल्स के बारे में पढ़ेंगे. तो इसी के साथ ही हमारा यहाँ पर वीडियो कंप्लीट होता है विद पास्ट टेंस. नेक्स्ट हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारा होगा फ्यूचर टेंस के साथ. यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.